हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, तैयारी के इसी क्रम में आज इंग्लिश पेडागोजी का ये वीडियो नंबर 8 है। और ये जो वीडियो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर 2024 लैंग्वेज 2 का और पेपर 2 का है। इससे पहले हम लैंग्वेज 1 और पेपर 2 का पार्ट नंबर 7 में अध्ययन कर चुके हैं। और फ्रेंड्स ये जो लैंग्वेज 2 और पेपर 2 का है, इसी से जो इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको इसमें कवर किया गया है। तो आप 1 बाय 1 उनको देखें और देखने के बाद अपना आंसर लगाएं और फिर आंसर को अपने चेक करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें फ्रेंड्स पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या चीज़ होती है। फ्रेंड्स लैंग्वेज जो 1 होती है उसमें एक अनसीन पैसेज होगा आपका और एक पोइट्री होगी। और फ्रेंड्स लैंग्वेज 2 में आपके जो होते हैं, लैंग्वेज 2 में फ्रेंड्स आपके 2 अनसीन पैसेज होते हैं और यही थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, और कोई डिफरेंस नहीं है। और जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स वो लगभग सेम होते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर दोनों का ही अध्ययन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला प्रश्न। फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टीचिंग से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लर्निंग टू राइटिंग बाय अंडरगोइंग डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग इज नोन एज। ऑप्शन ए प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ऑप्शन बी प्रोडक्ट अप्रोच राइटिंग, ऑप्शन सी एनालिटिकल राइटिंग, डी creative writing. Which option is correct for this question? Okay, now check your answer. Answer of this question, option A is correct for this question. Process approach to writing. A answer is correct for this question. Learning to writing by undergoing different stage of writing is known as process approach to writing. So our answer of this question, option A is correct. Next question, which of the following is the most suitable assessment activity for assessing learners communication skills? Assesses learners communication skills. Option A, describe as seen from a picture book, B, playing a role in a role play, C, listening to an audio text and responding to it only, D, writing a speech in a given situation. Which option is correct for this question? Okay, now check your answer of this question. Option B is correct, playing a role in a role play. B option is correct, B. Next question, question number 3. According to Chomsky, Chomsky is very important for the language. According to Chomsky, human beings have a blank to develop language. Option A, learning set. Option B, biological disposition. Option C, perceptual set. या option D, telegraphic readiness. Which option is correct according to Chomsky? Okay, now check the answer of this question. Noam Chomsky, option V is correct for this question, biological disposition. Option B. Noam Chomsky, known as the father of modern linguistics, has made crucial contribution in the field of linguistics. According to Chomsky, innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance, which is called the language acquisition device. LAD का जो ऑप्शन दिया था, LAD, Noam Chomsky. So our answer of this question, option B, is correct for here. Next question,
A multilingual approach to schooling from the very beginning is chiefly helpful in countering the ill consequences of option A, school dropouts, learning disabilities, C, losing one's own language, D, communication skills. Which option is correct? Multilingual approach. Okay, now check the answer of this question. Option C is correct for this answer. A multilingual approach to schooling from the very beginning to chiefly helpful in countering the ill consequences losing one's own language. So our answer of this question option C is correct, friends. Option C. Next, question number 5. You engage your learners in a fun energizer activity before beginning a new lesson. Before beginning a new lesson, you do this too. Option A, motivate and prepare learners for the class. Option B, reduce your workload as a teacher. Option C, maintain discipline in the class before the lesson. Option D, divert the attention of the learners. Which option is correct for this question? Okay, now check your answer. Answer of this question is A, motivate and prepare learners for the class. So our answer of this question option A is correct. Motivate and prepare learners for the class. Question number 6. Constructive as a learning. Constructive as a learning theory believes. Option A, learnings is individual characteristics. Option B, all learners cannot learn language. Option C, learning is completely psychological phenomena. Option D, learning is socially constructed. Which option is correct? Okay, now check your answer. Answer of this question is D, learning is socially constructed. Option is D correct for this question. Option D. Question 7. Sometimes people combine elements of different languages in the same sentences. Now see the questions attentively. Sometimes people combine elements of different languages in the same sentences. This is an example of option A, code switch. Option B, code mixing. Option C, socio-linguistic. Option D, dialectics. Which option is correct? Okay, now check the answer of this question. Option B is correct for this question. Option B, code mixing. Option B is correct. Now see the questions once again. Sometimes people combine elements of different languages in the same sentences. This is an example of code mixing. This is very important. और ये जो भी पीछा क्वेश्चन नंबर 7 था फ्रेंड्स, ये एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है. क्वेश्चन 8. Students often lack confidence when speaking due to unique pronunciation rules of the language. One way to overcome this problem. फ्रेंड्स ये लैक है थोड़ा. Now see the option. Encouraging children to read in class. Option B, conducting special speech therapy with a counselor. Option C, using game-like activity which require oral interaction in classroom. Option D, correcting whatever errors the students make. Which option is correct? Students often lack confidence.
Now see, check your answer. Option C is correct for this question. Using game-like activity which require oral interaction in classroom. So our answer of this question, option C is correct. Option C. Next question 9. Reading a novel is an example of extensive reading. Option B, intensive reading. ऑप्शन सी स्कैनिंग, ऑप्शन डी स्कीमिंग. फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आप एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है, तो आप इन चारों को देख लें. नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओके. नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Reading a novel is an example of extensive reading. So our answer of this question, option A is correct for here. Now see the question next. 10. What is the basic objective of using a quotation in essay? Now see attentively the question. Using a quotation in an essay. Option A, to set the tone of the essay. To explain a complicated issue. Option C, to present another point of view. Option D, to analyze specific data. Now see and find out which option is correct. Okay, now check the answer of this question is. फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो आपका द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ए कोटेशन एंड एसे, ऑप्शन टू सेट द टोन ऑफ द एसे. और फ्रेंड्स, और इसका जो आंसर है ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन आपका सी भी हो सकता है. तो फ्रेंड्स, इसमें जो अब कोटेशन का जो यूज है यहाँ पर टू सेट द टोन ऑफ द, या जो कोटेशन है टू प्रेजेंट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा. ऑप्शन सी. नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 11. A teacher provides learners of class 8 an article which she considered slightly above their language level. Learners have to work with the text to do many tasks. What is this known as? Option A, learning hypothesis. B, incomprehensible input. Option C, reading comprehension. Option D, comprehensible input. Which option is correct? Okay, now check the answer of this question. Option D is correct for this question, comprehensible input. D. Now see the next question. Teaching of grammar is chiefly useful for improving. Teaching of grammar chiefly improving fluency. Option B, accuracy. Option C, literacy. Option D, numeracy. Now check your answer. Option B is correct for this question, accuracy. Option B. 13 number. The objective of grammar teaching is to enable students to communicate. Which among the following is not improving with this object? Option A, student should have command over every aspect of each grammar point. Option B, students need over instructions that connect grammar points with larger communication context. Option C, स्टूडेंट्स शुड, ये फ्रेंड्स स्टूडेंट्स है, इस मैन हो गई, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, स्टूडेंट है ये. शुड मास्टर ओनली दोज एस्पेक्ट दैट आर रिलेवेंट टू द इमीडिएट कम्युनिकेशन टास्क. ऑप्शन डी, error correction is not always the teacher's first responsibility. Which option is correct? Okay, now check your answer. Option A is correct for this question. Students should have command over every aspect of each grammar point. So our answer of this question, option A is correct.
Now see the question 14, semantic cues. It is very important. Semantic cues in reading prompts. Option A, that help in decoding the word. ये word है friends, word हो गया. Word for the correct pronunciation of the word. D फ्रेंड्स है इसमें, डैट है, डैड हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. डैट सपोर्ट द मीनिंग ऑफ मेकिंग प्रोसेस. ऑप्शन डी, फॉर आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल फॉर्म. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is option C is correct, that support the meaning making process. Option C is correct friends, option C. Now see the question number 15 and the last question of this video. Which approach to language teaching learning believes language is a habit? Now see the option communicative language in teaching. Option B, cooperating language learning. Option C, natural approach. Option D, audio linguals. Which option is correct? Option D is correct for this question, audio linguals. Which approach? Audio lingual. Option D is correct. ये थे दोस्तों 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लैंग्वेज 2 पेपर 2 के. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं. और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.